started. So today we will be discussing about the topic that is very important, which is more important than how to identify stocks and when to buy and all of that. The topic is when to sell, which is a really important topic, and most people don't really talk about it very often. So I'll be sharing the screen. I'll go through examples, then you guys can ask the questions in between and after we have finished. Okay, so I'll be sharing the screen. Do let me know if you guys can see the screen or not. So okay guys, can you see the screen? Somebody just tell me. They can text or they can unmute themselves and tell me if you guys can see the screen or not. Yes, it's visible. ओके ओके. शुड वी कीप द लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश मिक्स और या फिर हिंदी में रखे या फिर इंग्लिश में रखे? Anything works for me. ओके, तो मिक्सचर ही रखते हैं दोनों का, आई गेस मोस्ट पीपल. राइट, सो ओके, सो यू गाइज कैन सी द स्क्रीन, राइट? सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज व्हेन टू सेल. ओके, सो व्हेन टू सेल. सो मार्केट जो है हमारा, मार्केट इज अ रिग्रेट मशीन. यू मस्ट हैव हर्ड दिस, राइट? मार्केट इज अ रिग्रेट मशीन. नो मैटर वट यू डू, हमेशा कोई ना कोई रिग्रेट रहेगा ही दिमाग में कि आई सोल्ड टू अर्ली, मे बी आई सोल्ड टू लेट. लेट मी गेट बैक टू द प्रेजेंटेशन. या, सो एज आई वाज सेइंग कि मार्केट इज अ रिग्रेट मशीन, राइट? सो देयर इज ऑलवेज रिग्रेट कि व्हाट इफ आई सोल्ड टू अर्ली, व्हाट इफ आई सोल्ड टू लेट, मैंने जल्दी बेच दिया, मैंने लेट बेच दिया. सो लाइक देयर इज ऑलवेज रिग्रेट नो मैटर व्हाट यू डू, right? So one thing that I always say is that ki we should always focus on the outcome, right, with the least regret, least amount of regret. कि जहाँ पे regret तो हमेशा रहेगा, because that is the thing with the market. No matter what you do, you're always going to feel regret. So I always say कि focus on the outcome with the least regret, जिसमें आपको सबसे कम regret है, right? Because मार्केट वर्क्स इन अ स्टेज वे, राइट? लेट्स से आपने जैसे यहाँ पे एक हमारे पास बहुत अच्छा सा एग्जांपल है यहाँ पे, राइट? सो लेट्स से यू बॉट अ स्टॉक एट समवेयर, राइट? सो जैसे आपने यहाँ पे बाय किया, राइट? सो उसके बाद वहाँ पे उसमें अच्छा सा रिटर्न मिल गया, लाइक क्विकली योर स्टॉक वेंट अप pretty quickly, right? Your let's say your stock went up 20, 30, 40% very quickly, like we saw in case of the PSUs, the railways, renewables and all of those, right? So बहुत जल्दी जल्दी जिनमें बहुत जल्दी मूव आ गया. And sometimes क्या होता है, you know that you should sell the stock at that point, right? Because आपका जो मोटिव था, वो आपका मोटिव ही बाय करने का, सिर्फ उस सर्टेन मूव को कैप्चर करने का था, राइट? बट फियरिंग दिस कि वो और कहीं वो स्टॉक और ऊपर ना चले जाए, कहीं वो वहाँ से डबल ना हो जाए, कहीं वो वहाँ से ट्रिपल ना हो जाए, मैं रिटर्न्स मिस कर दूंगा. यू समटाइम्स गेट कॉट इन दिस कि वहाँ पे जो आपका स्टॉक उसके बाद नीचे जाना शुरू कर देता है, राइट? एंड इसका ऑपोजिट होगा ऑल्सो टू, राइट? लेट्स से यू समवेयर यू बॉट हियर and fearing this that my stock will go down, fearing this you sometimes miss this kind of a move, right? So हम इस चीज को कैसे अवॉइड कर सके, उसके लिए हमें वी नीड सम काइंड ऑफ रूल्स, हमें कुछ रूल्स बनाने चाहिए अपने लिए, राइट? सो उसके लिए सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है हमारे लिए, उस रूल्स को, लाइक टू अचीव दैट आउटकम विद द लीस्ट रिग्रेट, लीस्ट अमाउंट ऑफ रिग्रेट. सो उसके लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, क्या रूल्स होने चाहिए एंड रूल्स को कैसे बनाना है. सो द फर्स्ट जो हमारा फंडामेंटल रूल होना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आई से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू आइडेंटिफाई इज व्हाई यू बॉट द स्टॉक इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? सो आधा काम तो आपका वहीं से हो जाएगा, सॉरी गाइस, राइट? सो आधा काम तो आपका वहीं से हो जाएगा वंस यू आइडेंटिफाई व्हाई यू एक्चुअली बॉट द स्टॉक, व्हाट वाज द रीजन यू बॉट द स्टॉक. क्योंकि बहुत बार होता है कि समटाइम्स वी बाय ऑन टिप्स, समटाइम्स हम देखते हैं हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने डाला है उस स्टॉक के बारे में, समटाइम्स वी गेट द आइडिया फ्रॉम ट्विटर, फ्रॉम फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, एंड like these days there are so many ways to get the stock ideas, literally so many, like we are always bombarded with the ideas, right? So वहां पे हमारे को एक चीज आइडेंटिफाई करनी बहुत जरूरी है कि why we actually bought the stock in the first place, हमने वो स्टॉक को लिया ही क्यों है, what was the reason. So सब लोगों के लिए एक डिफरेंट रीजन होगा, राइट? सो फॉर सम पीपल इट वुड बी फंडामेंटल रीजन
कि कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी लग रही है, फंडामेंटली बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, राइट? दैट कुड बी द रीज़न. वैल्यूएशंस काफ़ी चीप है, सो देयर कुड बी द फंडामेंटल रीजंस फॉर यू for buying a stock. There could be technical reasons, right? So कि आपका सेटअप बहुत अच्छा है, राइट? सो लेट्स से आपका ब्रेकआउट हुआ, या आप पुल बैक प्ले करते हैं, या फिर आप गैप अप प्ले करते हैं, या फिर आप हाई टाइट फ्लैग, या there are multiple ways, there are multiple kind of setups, and there are multiple kind of ways, right? To enter a stock. Why you bought the stock in the first place? For technical reason, right? I just like I like to play with the base breakouts, or sometimes with the gap ups, right? Gap ups one of my favorite, right? High tide flags are also really good, right? So my reason is that ki if I found a certain setup that I like, that's why I'm buying the stock. That is the technical reason, right? So that is something that you need to know before buying a stock. You need to identify ki what is the reason that I'm buying the stock. It could be a fundamental, it could be a technical reason, or for whatever kind of a time frame or kind of a trading I'm buying it for, like for a swing. So आप अगर swing के लिए buy कर रहे हैं, right? So swing का meaning क्या है? सिंपल सा meaning है आपका एक swing trade का, that I want to play a move for few days to few weeks. I just want to uh, play a move for just few days to few weeks, 10, 20, 30, 40%. मुझे स्टॉक ने दे दिया, I'll simply get out of the stock and I'll shift to another one, right? That is your swing, right? Or maybe I'm holding the stock for, let's say, 5 days, it's not moving, maybe I should go look for another one. Or maybe I'm holding the stock for 1, 2, 3 weeks and it's the momentum is there, but momentum अब थोड़ा slow हो गया, right? So that could be another reason to exit the stock. और हमारे पास क्या रीजन हो सकता है? सिंपल सा, कि आप एक बार बेस ब्रेकआउट, अगर यू बाय अ बेस ब्रेकआउट एंड उसके बाद जो बीच में थोड़ी सी कंसोलिडेशन होती है, राइट? सो ड्यूरिंग द सेम पीरियड, वेट अ सेकेंड, मोर पीपल आर जॉइनिंग मी, या सो एज आई वाज सेइंग कि आप स्विंग के लिए बाय कर रहे हो, एक बेस ब्रेकआउट, यू बॉट द बेस ब्रेकआउट, आपने बेस ब्रेकआउट बाय किया, एंड उसके बाद क्या हुआ कि आपका एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो गया, एंड यू वांट टू स्विच टू some other stock you identified, right? Maybe it could be of because of the technical reason, maybe it could be because of the fundamental reason, you decide to switch the stock from there, right? So आपकी mentality क्या है swing में, कि just I want to capture a certain थोड़ा सा move मुझे capture करना है, and then I'll shift to another stock, right? So that is one thing. So वो आपको पता होना चाहिए. For positional, you are buying a stock for few months or maybe even a year. आपको एक पूरा लंबा सा ट्रेंड कैप्चर करना है, राइट? फॉर एग्जांपल आई शो यू a really good trending stock like this Newgen software, like for example. So let's say he will go to the weekly chart and we'll just look at the overall journey of the stock. I am removing all the moving averages. So let's say आपको एक पूरा ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है आपने, राइट? सो आपने एक पूरा ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया एंड यू वांट टू राइट द होल ट्रेंड, राइट? आपने इंडस्ट्री आइडेंटिफाई कर लिया, आपने कोई फंडामेंटली गुड स्टॉक आइडेंटिफाई कर दिया, एंड यू वांट टू जस्ट राइट द ट्रेंड एज लॉन्ग एज इट्स देयर, बिकॉज देयर आर फेजेस लाइक दिस, राइट? यू नो, बिकॉज उससे पहले भी इट वॉज इन अ रियली गुड अप ट्रेंड, एंड उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक बहुत लंबा फेज आया था फ्रॉम 2021 एंड इट लास्टेड टिल December 2022, और मे बी वी कैन इवन से Jan 2023 और March 2023. सो काफ़ी मंथ्स के लिए, आपका मोर देन अ ईयर, वो स्टॉक ने कुछ नहीं किया, राइट? सो यू वांट टू अवॉइड सच फेसेस एंड यू वांट टू राइड सच फेसेस. सो आप पोजिशनल करते हैं कि आई जस्ट वांट टू बाय द होल, आई वांट टू राइड द होल ट्रेंड, बीच बीच में मुझे इन एंड आउट नहीं करना है. वेट अ सेकंड गाइस. राइट? सो वो आपका हो गया, आपका एक पोजिशनल रीजन कि आपने पोजिशनल उसके लिए बाय किया है, तो उसको आपको उन्हीं रूल्स के हिसाब से आपको ट्रेंड को हैंडल करना पड़ेगा, आपको अपनी पोजीशन को हैंडल करना पड़ेगा, एंड आपको उसी के हिसाब से आपको वो सेल भी करना पड़ेगा, राइट? सो आप इन दोनों को मिक्स करोगे अगर, सो दैट इज द वेयर द प्रॉब्लम अराइजेज, कि जब आप इन सब चीज़ों को मिक्स करते हो, या फिर आपका सिंपल सा एक इंट्राडे, like if you are intraday trader, I just want to capture a 4-5% kind of a move in single day and then get out and get in a different stock tomorrow, right? The problem arises when you try to mix all of these things. जब आप जंबल करते हो उन चीज़ों के बीच में, when you try to mix all of these things, wait a second,
सो वहाँ से जो आपका एक फंडामेंटल प्रॉब्लम अराइज होता है कि सपोज आपने फंडामेंटल रीजन के लिए स्टॉक को बाय किया है कि आई लाइक द कंपनी, राइट, आई लाइक द कंपनी, उसका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, उसका फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छा है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट। बट क्या होता है कि कल को द स्टॉक फॉल्स 10%, right? Then you are worried that what should I do, right? So you at that time you get you panic and you forget the reason why you actually bought the stock in the first place, right? So वो आपका mixing करने का हो गया, because right you actually bought the fundamental reason, and if you are buying for the fundamental reason, the stock even may correct a 50%. If the company is doing well, if the fundamental thesis is still there, you'll still be holding the stock, right? Maybe let's say you bought for a technical reason, right? You bought a technical reason, or you get a breakout and the stock starts going up, you get a good 30, 40, 50% kind of a move, and then you start hearing things about the company, that the company is a really good one, right? You get convinced, फंडामेंटल थोड़ा आपका वहाँ पे फंडामेंटल बायस आ जाता है। फॉर एग्जांपल यू एक्चुअली यू बॉट द स्टॉक फॉर द टेक्निकल रीजन, बट आपका वहाँ पे थोड़ा फंडामेंटल बायस आ गया बीच में। द स्टॉक इज अप 30-40%, एंड तब आप तब उसके बाद क्या होता है, समटाइम्स द स्टॉक फॉल्स आफ्टर दैट 10-15, मे बी इवन 20%, मे बी समटाइम्स इवन आपका पूरा मूव रिट्रेस हो गया वहां पे, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू द एग्जाम्पल जीनस पावर, let's say, right? So what happened here, there's a fundamental thesis, we all know ki smart meters ki theme and all of that, all those things, right? So what happens is, like, suppose you bought the stock here, you just waited for the technical buy point, right? So आपने just देखा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस बन रहा है, even if I remove all these lines, आपने एक देखा एक पूरा अच्छा सा आपका बेस बन रहा है, we can also call it an inverse head and shoulders kind of a thing, right? कि वो एक पूरा एक बेस बन रहा है, and you actually waited फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया टू बाय, एंड वहां पे आपने टेक्निकल रीजंस की वजह से स्टॉक को बाय किया, राइट? एंड यू somewhere back of the mind, because maybe because of the social media or maybe because of other things, you're still aware that there's the fundamental story, but you actually waited for the stock for a technical breakout and you actually bought the stock here, let's say. बट उसके बाद क्या होता है कि आपका सडनली ऐसा फॉल आ जाता है, राइट? बट समटाइम्स वी डोंट press that sell button. We don't press that sell button even if the stock starts declining, because आपके माइंड में वहां पे वो एक फंडामेंटल बायस आ गया उसके बाद कि there's it's a good theme and all of that it's a temporary correction and all, and now you're sitting with the stock. So there's not a problem if your original thesis was the fundamental. The problem arises because you actually bought the stock for a technical reason that was meant to be played purely for the technicals, right? I mean, it was meant to be played purely by the rules of technicals. But आपने क्या किया कि you bought the stock and it started going down, and you started giving yourself excuses that there's a fundamental story that it can become 10 bagger or 5 bagger or whatever, right? And you are now sitting with the loss, right? So that is the where the problem arises कि when you try to mix couple of things, जब आप उनके बीच में जंबल करते हो, उनको मिक्स करने की कोशिश करते हो। सिमिलरली यू बॉट फॉर अ स्विंग एंड यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट टू द पोजिशनल, बट समटाइम्स वो मजबूरी का हो जाता है, राइट? सो एज आई एक्सप्लेन कि आपका अगर स्विंग का बाय है तो आपका सिंपल सा मोटिव है कि यू आर ट्राइंग टू कैप्चर 20-30-40% काइंड ऑफ अ मूव, एंड जैसे ही उसमें थोड़ी सी वीकनेस आती है और द ट्रेंड गेट्स स्लोअर, you simply exit that particular stock, right? So that is the reason कि you actually bought for the swing. But sometimes what happens कि वो you like the stock कि ठीक चल रहा है and you convert it to the positional, so that is actually not that big of a problem कि आप swing को positional में convert कर रहे हो. But sometimes what happens कि आपने एक अच्छा सा buy लिया है positional, but it's moving slowly, it's moving slowly for the time being, and then at the same time there's another stock that is flying high and you switch your positional to swing, तो वहां पे भी आपने गलत टाइम पे सेल कर दिया उसको. दैट इज अनदर प्रॉब्लम कि जो आपका जो ओरिजिनल थीसिस था स्टॉक को बाय करने का, आपने उसको छेड़ दिया, एंड सिंपली आपका जो इंट्राडे आपने उसको स्विंग या पोजिशनल में कन्वर्ट किया. लेट्स से यू बॉट द स्टॉक फॉर द इंट्राडे, बट instead of going up you didn't put the stop loss, and the stock started going down after that, and you just kept on holding it. So the problem arises when you try to mix multiple things. So again I am saying कि आपका सबसे
टू व्हेन टू सेल को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कब बेचना है, राइट? सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई आई बॉट द स्टॉक इन द फर्स्ट प्लेस। जब तक आपका वो रीजन क्लियर नहीं होगा अपने माइंड में, राइट, कि आपने क्यों लिया था किस स्टॉक को, किस पर्पस की वजह से, फंडामेंटल रीजन, टेक्निकल रीजन, स्विंग के लिए लिया, पोजिशनल के लिए लिया, इंट्राडे के लिए लिया, तब तक यू वोंट बी एबल टू मेक बेटर सेल डिसीजंस। एंड आई सेड अर्लियर कि मार्केट इज अ रिग्रेट मशीन। देर इज नो आउटकम वेयर यू विल बी सेटिस्फाइड, नो मैटर वट, देर इज नो आउटकम वेयर यू विल बी सेटिस्फाइड। सो आई ऑलवेज से कि ऑलवेज लुक फॉर द आउटकम विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिग्रेट, राइट? बिकॉज ये चीज़ तो बार बार रिपीट होगी कि यू बॉट हियर, यू नो दैट यू शुड सेल द स्टॉक, बट फियरिंग कि ये यहाँ से डबल हो जाएगा, यू गेट कॉट इन द ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड सिमिलरली you know that ki I should keep holding the stock, that it can go even higher, and you sold early fearing that this will happen, right? So वो दोनों साइड चलता ही है, right? So that is one thing that we need to focus on. So इसका एक सॉल्यूशन बड़ा अच्छा, मेरे एक प्रिय मित्र Prakash Lama, his real name, right? And you must know him on Twitter by Sakata Soma, right? So he posted few days ago on X, right? कि there are 3 cell systems, right? So मैं इसी को थोड़ा डिटेल में आगे मॉडिफाई करना चाहूँगा, right? कि because this tweet alone covers everything, right? कि there are 3 main cell systems, right? So you sell on to strength, or you sell on to weakness, और मैकेनिकल सेल ऑन एस एक्स रिस्क मल्टीपल, मतलब जो आपका होता है आर आर, उसके बेसिस पे आपने सेल किया। सो जो आपका स्विंग ट्रेडर हो गया, लाइक मी और मे बी समबडी समवन यू ऑल्सो, कि जो आपका स्विंग ट्रेडर है उसके लिए बेस्ट आउटकम्स है सेल ऑन टू स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल सेल ऑन आर मल्टीपल। वैसे जो आपका पोजिशनल ट्रेडर है जिसको लॉन्गर ट्रेंड को राइड करना है, जिसको एक थोड़े लंबे ट्रेंड को राइड करना है फॉर फ्यू मंथ्स एंड फॉर लेट्स से फॉर इवन ईयर, राइट? सो वो अगर थोड़ी थोड़ी वीकनेस पे सेल कर देगा तो दैट वोंट कट इट, राइट, फॉर हिम, राइट? सो उनके लिए द सेल ऑन टू स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल सेल लाइक योर आर मल्टीपल पे सेल करना इज नॉट दैट राइट, यू नो, beneficial, right? So some peak traders use a combination of both. So each system has its own pros and cons, and the first thing is know yourself first and find the system that suits you. As I said कि आपको एक तो first पता होना चाहिए कि why you actually bought the stock, and what kind of a trader you are, how, like आपको किस टाइप के, किस तरीके से ट्रेंड को राइड करना इज मोर कंफर्टेबल फॉर यू, राइट? एंड रिमेंबर यू आरंट ऑप्टिमाइजिंग फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट्स ओनली, but for the highest profit with maximum ease of trading and sustainability. Another important point कि आपको सिर्फ एक मैक्सिमम प्रॉफिट्स को ही नहीं देखना है कि मैं कितना ही प्रॉफिट कमा लूँ। Another important thing is कि आपका ईज ऑफ ट्रेडिंग, कि आपको जो वो आप अपना सिस्टम डेवलप करें, राइट? जो आपका आपका पूरा सिस्टम डेवलप करे आपका सेलिंग का, बाइंग का, कि वो ईज ऑफ ट्रेडिंग भी होनी चाहिए एंड वो सस्टेनेबल भी होना चाहिए, कि नो मैटर व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस, व्हाट काइंड ऑफ मार्केट इज देयर, यू स्टिक टू योर रूल्स, एंड उस उन रूल्स को आपको बार बार चेंज ना करना पड़े, राइट? सो अगेन I have given up a fair bit of paper profits from them, but the same strategy also allowed me to amass them in the first place, right? So first, coming on to the first strategy, that is selling onto strength, means तो sell into strength means कि आपका sell into strength क्या होता है? So let's say there's a, like this is an example, this is a really good example that I've shown here. Let's say you bought the stock, technical reason, for a technical reason, right? You bought the stock because it was consolidating here, and consolidations के बाद आपका एक breakout आया एंड वहां से आपका ट्रेंड स्टार्ट हुआ। सो सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ क्या होता है कि जब आपका स्टॉक ऊपर को जा रहा है, जब आपके स्टॉक में स्ट्रेंथ है, मींस जब आपका स्टॉक अप ट्रेंड में, आपके स्टॉक में स्ट्रेंथ है, जब वो ऊपर जा रहा है, व्हाट यू डू इज यू partial book, and after some time when let's say it has moved according to your estimate, right, it has moved according to your estimate, और जितना आपको एक मूव को कैप्चर करना था, once you have done that, right, you book the rest, or maybe maybe if the stock is, if the trend is still going on, you keep booking some of the partial profits. So right, so आपका sell into strength is simply this, कि आपने एक बहुत अच्छा ट्रेंड को कैप्चर किया, लाइक दिस एग्जांपल आइनॉक्स विंड, मेनी पीपल कॉट दिस ट्रेंड, पूरा एक 100% मूव दिया इस स्टॉक ने, मेनी पीपल मिस्ड एज वेल, I too missed some of this trend, right? So there, so इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल है कि लाइक
like there's nothing wrong during this whole uptrend, there's nothing wrong, you can easily handle the stock during this whole uptrend. बट क्या होता है कि आपका आपका एक सिंपल सा सिस्टम है, आपने एक सिस्टम को बना रखा है, मीन्स कि you have rules and you are gonna follow those rules no matter what, right? So आप क्या करते हैं कि you what you do, let's say you bought the stock here right after the breakout from the consolidation, you bought the stock here and your stock moved, your stock is going in a strong uptrend. So whenever there's a big move in a single day, let's say, what you do is you book partial profits there, like you book the one third, right? And उसके बाद वहां से ट्रेंड कंटिन्यू होता है and you're still holding the two third position there and you again book one third more, वहां से भी आपने थोड़ा सा और बुक कर दिया and what you do is after some time you book the rest, right? So यहाँ पे it's looking like picture perfect, but it won't be this picture perfect every single time, कि वहां पे कई बार क्या होगा कि stock will continue keep going up and then you'll regret कि मैंने बहुत जल्दी बेच दिया. But why you sold it too early? Because you are following the system of selling into strength. आप वो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे यू आर जस्ट selling the stock in the strength, and this is most suitable for a swing kind of a trader. Like for example मेरे लिए, या फिर you look at the chartist or you look at such people who are on Twitter who are swing traders. So उनके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है कि selling into strength, कि जब स्टॉक आपका स्ट्रेंथ में है, जब आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है, that is the point where you keep selling bit by bit, right? So that is one thing, right? For example, and let's say आप कोई stock का example ले लेते हैं, right? Let's take the example of IRFC or other any such stock, right? So again, let's say इधर भी हमने example लिया, let's suppose another example we take here, कि यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा आपका हाई टाइट काइंड ऑफ फ्लैग बना है, या फिर एक सिंपल सी कंसोलिडेशन हुई है आपकी यहाँ पे, राइट? लेट मी रिमूव दिस इंडिकेटर फॉर नाउ, राइट? सो आपके एक बहुत अच्छी सी कंसोलिडेशन है, कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं इसको, एंड यू सिंपली बॉट द स्टॉक एट द ब्रेकआउट, राइट? सो व्हाट यू डू इज एज द स्टॉक इज मूविंग अप यू कीप पार्शियली सेलिंग द स्टॉक, लाइक लेट्स से यहाँ से मेरा आ गया एक 20% काइंड ऑफ मूव आ गया, सो आई हैव अ रूल कि आई विल बी सेलिंग वन थर्ड ऑफ द पोजिशन आफ्टर अ 20% मूव एंड होल्ड द रेस्ट ऑफ द पोजिशन. एंड लेट्स से वहाँ से भी मेरा, सो आई सोल्ड द सम ऑफ द पोजिशन हियर, लेट्स से वन थर्ड पोजिशन हियर, एंड वहाँ से मेरा 20% मूव और आ गया ऊपर को, लेट्स से वहाँ से भी 20% स्टॉक और ऊपर चला गया, एंड दैट इज वेयर आई विल सेल वन थर्ड मोर, एंड आफ्टर दैट वहाँ से 10-15% ऊपर चला गया, या फिर वहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस आ गई, राइट? सो आई विल बी सेलिंग द सम ऑफ द राइट रेस्ट ऑफ द पोजिशन देयर, राइट? सो दैट इज वन वे टू सेल इन टू स्ट्रेंथ. सो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इट लुक्स ईजी बिकॉज वी आर एनालाइजिंग द चार्ट्स अर्ली, बट वो जो आपको मेंटली उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, कि यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि आई विल बी फॉलोइंग दिस रूल नो मैटर वट, राइट? दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आई विल बी फॉलोइंग दिस रूल नो मैटर वट, कि आई विल बी सेलिंग into the strength when the stock is going up, I'll be selling the stock, and before the stock actually cracks down I'll be selling whole position, right? सो उसमें आप अपना देख सकते हैं, आपको 20% पे, आपको 30% पे, आपको 40% पे, वट एवर यू मे लाइक, राइट? कि आपको वहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको वो बेचते रहना है, वन थर्ड करके, एंड यू कीप सेलिंग द स्टॉक while it is going up. That is the one of the methods, that is one of the systems to sell into strength, right? Second is selling into the weakness. सो सेलिंग इनटू द वीकनेस क्या होता है आपका? सो सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ हमने जो देखा, सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ इज बहुत सिंपल, कि जब आपका स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, तो उस अप ट्रेंड के दौरान इन द मिडल यू कीप सेलिंग सम ऑफ द पोजीशन, वन थर्ड करके यू कीप सेलिंग द पोजीशन, राइट? Selling into weakness is quite opposite of that. Here what you will try to do is you will try to ride the whole trend and you won't sell unless the stocks start showing the weakness, right? For example हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छा सा एक गैप अप बना था, एंड very high volume as well, and a very strong move that came up on that day as well, right? So the stock keeps on going higher, right? And still it's above the 50-day 21-day moving average and all. यहाँ पे थोड़ी सी weakness आई, but that is still bearable because again there's no continuation that on the downside for now, right? And you keep holding, and वहाँ से अभी आपका थोड़ा एक जंप आ जाता है, and the stock keeps going up and up.
बट हियर व्हाट्स इंटरेस्टिंग हियर इज दैट कि यहाँ पे आफ्टर अ वेरी वेरी गुड अप मूव फ्रॉम अराउंड लेट्स से आपका 600-700 से अराउंड 1100 का जो आपका पूरा मूव आया, उसके बाद व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज दैट द स्टॉक हैज स्टार्टेड कमिंग डाउन, आपका जो मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर रहा है, आपका लाइक 10-21 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, एंड यहाँ पे आपका 50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर रहा है. सो मीन्स दैट मीन्स कि आपके स्टॉक में जो स्ट्रेंथ थी वो खत्म हो गई है एंड वहां पे वीकनेस आ रही है स्टॉक में, राइट. सो वंस यू आइडेंटिफाई सच वीकनेस देन यू स्टार्ट सेलिंग द स्टॉक. इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हियर ऑल्सो यू विल बी गिविंग सम पोर्शन ऑफ द गेन्स अप, राइट. जैसा कि हमारे पास प्रॉब्लम थी सेलिंग ऑन टू स्ट्रेंथ वाली सिस्टम में, जो हमारे पास प्रॉब्लम थी कि मे बी आई हैव सोल्ड द, लेट्स से जो हमारा स्टॉक है वो एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है, and you have sold all the position somewhere here and the stock still keeps on going up, so you are giving up that much gain after that, right. So वहां पे वो प्रॉब्लम है. सेलिंग इनटू वीकनेस में क्या प्रॉब्लम है कि योर स्टॉक हैज गॉन अप लाइक दिस एंड उसके बाद वो नीचे आ रहा है एंड देन फाइनली व्हेन इट शोइंग द वीकनेस, बिकॉज बीच में छोटे मोटे पुल बैक्स चलते रहते हैं, स्मॉल कंसोलिडेशंस हैपन, राइट. सो यू कांट बी सेलिंग लेट लाइक दिस एरिया, राइट. सो यू कांट बी सेलिंग एट दीज एरियाज, तो आपको थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम के हिसाब से होल्ड करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई इट्स बेटर फॉर द पोजिशनल ट्रेडर, राइट. बट फाइनली व्हाट हैपेंस कि जब वो उसमें क्रैक आता है एंड द स्टॉक इज डाउन लेट्स से 5-10-15% फ्रॉम इट्स टॉप, तो वहां पे जाके यू विल बी सेलिंग द स्टॉक. सो देयर ऑल्सो यू आर गिविंग अप द गेन्स फ्रॉम द टॉप, राइट. सो वहां पे भी जो हमारा बेसिक प्रॉब्लम था, बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम था कि देयर इज ऑलवेज रिग्रेट, मार्केट इज अ रिग्रेट मशीन, कि आपको 15-20% गेन्स वहां पे गिव अप करने पड़ रहे हैं. दैट विल हैपन इन दिस केस एज वेल. But as I said, with any system, you'll have to make peace with yourself. Ki if I'm following this system, no matter what, I'll be following this system only. Because as I said, ki what we have to do is we have to aim for the outcome with the least regret for us. हमारे लिए क्या जो outcome है for the least regret, right? So it's better for a positional trader. For example, again, Devgi Torque, this stock. So right after the IPO, it gave a really good move. राइट. सो बीच में थोड़ा सा वीकनेस आया था बट वेरी क्विकली बाउंस बैक, एक आपका चैनल के अंदर भी चल रहा था. बट व्हाट हैपेंड, व्हाट इंटरेस्टिंग आफ्टर दिस एरिया, कि वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यू हाई बनना बंद हो गया एंड देन योर चैनल वॉज ब्रोकन, राइट. सो फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस. व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट कि द स्टॉक वेंट बिलो ऑल द की मूविंग एवरेजेस एंड वहाँ पे उसने थोड़ा सा कंसोलिडेशन स्टार्ट किया एंड देन वहाँ से भी एक ब्रेक डाउन हो गया. सो दैट इज द पॉइंट वेयर यू विल बी सेलिंग इन दिस केस ऑफ सेलिंग इनटू वीकनेस, कि जब आपका एक पूरा ट्रेंड ओवर हो गया एंड फाइनली वहां पे आपका एक कंफर्मेशन जैसा मिल गया आपको कि द स्टॉक इज गोइंग इन द डाउन ट्रेंड, दैट इज वेयर यू विल बी सेलिंग द स्टॉक. अगेन यू आर गिविंग अप सम ऑफ द गेन्स एंड यू आर ऑल्सो गिविंग अप सम ऑफ द टाइम, बिकॉज आपको उस पूरा एक प्रॉपर सा वेट करना पड़ेगा वहां पे कि वहां पे स्टॉक में ब्रेक डाउन आ रहा है, आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, राइट. सो दैट इज द प्रॉब्लम देयर कि यू विल बी स्पेंडिंग time and you'll be giving up 10-15% kind of your gains as well, right. So that is something that you'll have to make peace with, कि आपको वो चीज करनी पड़ेगी कि आई एम विलिंग टू गिव अप दिस मच गेन्स, राइट. अनदर एग्जांपल हम देखते हैं एजीआई ग्रीन पैक. देयर वाज अ really good rally, like whole rally the stock stayed well above the 50-day moving average, right. So that is a golden rule for any positional trader कि I am just following the 50-day moving average because it gives enough space for the stock to consolidate, to continue to regain strength and move higher, right. Most of the cases जब भी आपको एक अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक मिलेगा and you want to go for the positional, right. So it's better to use the 50-day moving average as your trailing stop loss, right. So जैसा कि इस एग्जांपल में कि the stock you rode a very well uptrend, here what happened is that the stock failed to give a continuation after that. So वहां से consolidation में चल गया which is very normal. The stock is still above the 50-day moving average. But what happens after that is that कि उसके बाद दोबारा the stock tried to go up but again failed, and this time it started coming down, broke the 50-day moving average plus, but what you see कि प्राइस का सपोर्ट है वहां पे, राइट. सो दिस वाज द एरिया वेयर एक एरिया मिल गया है आपको जहां पे स्टॉक बार बार जो कि एक सपोर्ट ले रहा है. बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि आपका मेजर जो सपोर्ट था दैट इज आल्सो ब्रोकन, द स्टॉक इज बिलो ऑल द मूविंग एवरेजेस.
द स्टॉक ट्राइड टू कम अप बट अगेन इज स्टिल बिलो द मूविंग एवरेज, वहां पे वो उसको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, इट्स स्ट्रगलिंग टू कम बैक अप, right? So that is the problem that is happening there. So again, what you will be doing here is you will be selling the stock because आपको weakness identify हो चुकी है, you know that the trend is changing there. So आपने एक अच्छा सा पूरा trend ride किया, but you will be giving some of the gains from the up. So right, again, selling on to strength के system में you might have sold all of the position here, right? So again, सब जगह आपको थोड़ा थोड़ा गेन तो जो आपका है गिव अप करना ही पड़ेगा, दैट इज नॉट ऑप्शनल, that is like compulsory. Market will market will take its fees. Like another example, if we look at very popular example from the US market, recent example, SMCI, right? Super Microcomputers. So everybody knew this was a superb picture perfect kind of a breakout from a very big range. Just look at the beauty of this chart. There was a small gap up as well. Look at the breakout candle, look at the strength, and look at the trend that followed. But what happened after that? There was a big drop right after that. So that is where you see कि वहां पे एक क्लाइमैक्स जैसा टॉप बन चुका है, where I should be selling the stock, right? So आपने what you are doing here is you are giving some of the gains because वहां से almost कितना उसका I think so 15-20% kind of a fall आ गया था उसमें, right? So you'll be giving up gains from around $1,000 to you're selling around somewhere around $700. But if you are following the other system ki selling on to strength, then also you would have booked some of the position here, some of the position here, or maybe your all of the position right there, right? So उसमें भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है, दोनों जगह पे वो कॉम्प्रोमाइज है. सो जो थर्स्ट हमारे पास सिस्टम आता है कि सेल ऑन आर मल्टीपल, दैट इज द मोस्ट मैकेनिकल काइंड ऑफ अ सिस्टम कि मैं आर मल्टीपल इज सिंपली रिस्क रिवॉर्ड, कि हाउ मच रिवॉर्ड यू आर गेटिंग और हाउ मच रिवॉर्ड यू आर एमिंग फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क. कि अगर मैंने 10 रुपए का रिस्क लिया है, राइट, इफ आई एम टेकिंग अ रिस्क ऑफ 10 रुपीज, आई एम एटलीस्ट एमिंग अ रिवॉर्ड फॉर 30 rupees or 40 rupees. That is your 3 hour, 4 hour, or there could be multiple hours, right? So again, our aim is to get as much R multiple as possible. But again, जब आपको एक सेल सिस्टम बनाना है, देन यू विल हैव टू सेट अ रूल, मैकेनिकल सेल, कि मेरा इतना आर मल्टीपल बन जाएगा, मैं उस पर सेल कर लूंगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन ऑफ माई एंट्री. एक्चुअली बॉट द स्टॉक एट 645 and my stop loss was at 620. So what I do, I follow the mix of sell on R multiple and this selling into strength. So I use the combination of these two systems, right? So जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इस example में है, right? So my entry was at 645 and my stop loss was at 620. So that is a SL of 25 points, right? So what I'm aiming is that what I usually do is कि I'm at least I'll book 1/3 of the position at a 3 hour. That means 3 times जब मेरा risk का मिल जाता है मुझे, that is 75 points. So that means I sold partially at 720 or 710. वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है because you can't be that much mechanical. हम मशीन नहीं है, emotions play में आ जाते हैं, right? So and rest I sold on the way up, right? I sold a little too early, so that's still a regret, right? So but you are here, what you are doing is you are selling on the R multiple, right? So अगर हम example के लिए हम कुछ stocks को देखें, some very popular names that we have here, like IRFC हमने देखा ही, right? So R multiple आपको देखना कैसे, आपको calculate कैसे करना है, let me show you simple सा. So let's say there's a tool on the left side. You come here, 1 2 3 4 5, fifth option में आपको एक long position करके एक tool मिलेगा, right? So let's say my buying is somewhere around this level. Let's say I bought somewhere around 105.5 and I have a stop loss rule कि 4-5% में I'd keep my stop loss around somewhere 4-5%, maybe sometimes 5.5% or 6%, कई बार चले जाता है, right? So my stop loss is somewhere around 5.59%. That is 5.90 amount है जो कि हमारा 18.75, right? Right? So इसको क्या देखूंगा मैं कि यहाँ से क्या at least I'm aiming for a 3 hour reward, right? So that is I at least need a 17-18% kind of a move where I'll be selling 1/3 of the position. That, so as I said कि ये एक बहुत मैकेनिकल सिस्टम है and it may not work exactly like this. बट आपको माइंड में क्या रखना है कि मेरा एक 2-3 आवर का एक सर्टेन फिगर रीच हो गया, तो देयर आई विल बी सेलिंग सम ऑफ माय पोजीशन
wait a second, right? So there I'll be selling some of my position and rest I will be riding with my different rules, like as I said ki you could be selling into strength, you could be waiting for the selling into weakness, you could be following your 21-day moving average as the trend falling in a really good uptrending stock, right? Because again if you see यहाँ से जो आपका एक बड़ा base breakout आया था, till this point the stock didn't break the 21-day moving average, and that is a 93% kind of a move, right? So again, right, so that is one thing ki you sell on the R multiples, but sometimes it's difficult. Let's say you get a stock like this iRadar, right? What a move it gave, right? So again yeah pe bhi you can follow the simple rule, right? So this was the perfect entry point somewhere around, let's say 108 के आसपास. Let's say I am taking a stop loss of, let's say 4.5%, let's say around 4.72%. So my 3R is very close somewhere around this 14-15% kind of move, जो कि बहुत छोटा लग रहा है if we look at the overall this move, right? So ये बहुत छोटा लग रहा है, but again that is something you will have to make peace with कि I am booking 1/3 of the position and I will be riding rest of the position here, right? So that is something that you'll have to make peace with. Otherwise if you're following the sits now, let's say selling onto weakness, so you will be selling somewhere here जहाँ पे आपका actual downtrend start हो चुका है after a big move, वहां से भी आपको टॉप से अपना गेन है जो 20-25% गेन आपको इस केस में गिव अप करना पड़ेगा. एंड इफ यू आर सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ कि जब वो स्टॉक ऊपर जा रहा है तो यू माइट हैव सोल्ड समवेयर अराउंड हियर, बिकॉज अगेन the stock moved really well. Suspicious, let's say, I guess we'll deny suspicious users, right? So that is one thing, right? So I guess these are the systems that you will be following. Like if we take the example of any other a different kind of stock जो कि आपका circuits में चल रहा है. Wait a second, this, let's say this Ware, what's happening here is just the stock just keeps on going up and in circuits, right? So what you do here, in my case, like it's selling into strength. Like I won't wait for the weakness, because in such stock I don't know कि अगर lower circuit start हुआ तो वो कहाँ पे जाके बंद होगा, राइट? सो आपको वो चीज़ भी केस टू केस पे वो डिपेंड करेगा, वो आपको अलग अलग चीज़ों को देखना पड़ेगा, राइट? सो sometimes like you get a some like Inox Wind again, sometimes you get a stock like this, right? So I guess okay, we'll skip these kind of accounts which are a little bit suspicious, राइट? सो वहाँ पे भी आप क्या करोगे, आप आर मल्टीपल्स पे सेल कर सकते हो, और लाइक समटाइम्स यू माइट हैव सोल्ड समवेयर हियर जब वो थोड़ा डाउन मूव आ जाएगा, इफ यू आर फॉलोइंग द सेल ऑन वीकनेस काइंड ऑफ प्ले हियर, और मे बी जब तक उसने 21 को ब्रीच नहीं किया, यू आर नॉट सेलिंग, बिकॉज वहाँ के बाद काफ़ी अच्छा मूव आ गया इसमें, और यू आर जस्ट selling when the stock is going up कि आप you sold somewhere here, you sold somewhere here, or maybe you sold somewhere here, right? So those are different kind of system, and that depends on the investor to investor, trader to trader कि मुझे कौन सा system follow करना है, right? So that is what when to sell is about. So I'm open to questions, you guys can ask questions now. Hello, sir. Hello. Hello. Hello, sir. I'm Mahesh. Hello Mesh sir. Hello. हाँ I Hello. can hear you. Sir, मेरे just example आपकी आवाज़ कट रही है थोड़ी. वो within rise हुआ तो वो क्या सर आपकी आवाज़ कट रही है. करना चाहिए या होल्ड करना है? सर आपकी आवाज़ कट रही है. आपकी आवाज हेलो आपकी आवाज़ कट रही है बीच बीच में. हेलो आपको अभी क्वेश्चन आवाज आ रिपीट रही है, सर? हाँ आपको क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा. आपकी आवाज़ अभी भी नहीं आ रही, आपको क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा.
अब आई आपकी आवाज़, आप क्वेश्चन रिपीट हाँ करिए। सर, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था। ओके। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। समझो राइट। XYZ स्टॉक बाय किया और वो राइट। सडन 30-40% राइज हुआ विद इन 15 डेज, जस्ट राइट। विद इन 2 वीक। राइट। तो उसमें क्या करना चाहिए? पूरा प्रॉफिट बुक करना चाहिए या पार्शियल प्रॉफिट या होल्ड करना चाहिए? सी यूजुअली ऐसे मार्केट एनवायरनमेंट में हम क्या देखते हैं कि समटाइम्स कि अगर वो थीम से रिलेटेड है, किसी सेक्टर से रिलेटेड है, किसी थीम से रिलेटेड है, तो हाँ, ये उसमें जस्ट काफ़ी ये रेलवे स्टॉक में अभी देखिए, रेलवे और PSU स्टॉक में यही हो रहा था। राइट, राइट, सेम चीज़ हो रही थी। बट उसके बाद भी क्या हो रहा था कि वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन आता था, उसके बाद वो मूव कंटिन्यू होता था, राइट? सो वहाँ पे वही बात आ गई आप कि रिग्रेट वाली बात आ जाती है वहाँ पे कि मैंने अगर पूरा बेच दिया एंड वहाँ से भी वो 30-40% ऊपर और चला गया, राइट? सो ऐसे सिचुएशन में बेटर है कि पार्शियली बुक करो उसको एंड रेस्ट आपको एक स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करना चाहिए। दैट इज़ माय ओपिनियन। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पार्शियली उसको बुक किया बिकॉज़ अगर आपका वहाँ से स्टॉक फेल भी हो जाता है तो एटलीस्ट यू हैव अ प्रॉफिट कुशन। उसके बाद आपका जो एक प्रॉफिट कुशन होगा वहाँ पे जो आपने पार्शियली बुक कर दिया था, आप 1/3 पोज़ीशन कर लीजिए, लाइक आपका 25-30% पोज़ीशन बुक कर लिया, राइट? उसके बाद आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ फॉलो किया। अगर ट्रेंड अच्छा है तो 21 डे मूविंग एवरेज के साथ फॉलो हो सकता है। अगर आपको थोड़ा लॉन्गर राइड करना है तो 50 डे मूविंग एवरेज के साथ हो सकता है। या फिर आप सिंपली जैसा आपका बेस मेरे बेस बनता रहता है, बेस का लो आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं मल्टीपल वेज। यस सर, यस यस यस। सो somebody else सर want to मेरा ask? दूसरा क्वेश्चन क्या Yeah, है? yeah, sure, continue. सर एक जो समझो अभी जो IPO आते हैं ना, IPO, हाँ। तो उसमें जो IPO बेस्ड ब्रेकआउट बनते हैं ना, राइट। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है सर, मैं तो नया हूँ मार्केट में, लेकिन मेरा एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है हाँ। कि सर वो ब्रेकआउट बहुत पावरफुल रहते हैं। जैसे अभी आजाद इंजीनियरिंग में हुआ था राइट, लास्ट राइट, बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। सम डेज बैक। तो उसमें क्या है सर, मेरी गलती क्या हो जाती है, वो स्टॉक में मैं ना 3-4-5% बुक करके निकल जाता हूँ और वो सेम स्टॉक नेक्स्ट 8 दिन या 10 दिन में 30-40% राइज हो जाता है। तो राइट। उसमें क्या करें सर? सो उसमें अगेन आपको थोड़ा वहाँ पे मैं बोलूँगा आपको थोड़ा वहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा, आपको थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी कि लेट्स से आपने गेन बना लिया जल्दी से, बिकॉज एज यू साइड कि आप नए हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि हमारे को जल्दी से थोड़ा सा गेन मिल जाता है, हम बाहर निकल जाते हैं फटाफट से कि हमारे को लगता है कि मुझे ये गेन लूज नहीं करना है। क्या जैसा कि आपने बोला कि आप 5-7% लेके निकल जाते हैं एंड स्टॉक उसके बाद 30-40% ऊपर चल जाता है। सो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी कि कोई बात नहीं, अगर इफ़ आई लूज माई दिस 5-7% जो कि मेरा ओरिजिनल गेन बना है उसमें, बिकॉज अगर आपको लॉन्गर मूव कैप्चर करना है तो आपको वो एक सर्टेन रिस्क लेके हमेशा चलना ही पड़ेगा। बाकी अगेन सेम थिंग वहाँ पे भी कर सकते हो कि आपको जहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा वहाँ पे आपने पार्शियल बुक कर दिया एंड रेस्ट को आपने होल्ड किया प्रॉपरली आगे ट्रेल करने के लिए, बिकॉज दैट इज द ओनली यस सर, सॉल्यूशन। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। Somebody else want to ask any question? Yeah, Ajay, I have one few questions. Sure, sir, sure. Which of the strength sector do you feel still have the strength? Like related to your previous colleague Okay, okay. questions, हाँ. the railway theme and the PSU banking. Apart from that, do you find any sector where the strength is still available? राइट, सो एक तो दिस रिन्यूएबल स्पेस, आपका होल एनर्जी रिन्यूएबल पावर स्पेस, दिस होल स्पेस है स्ट्रेंथ। लाइक लुक एट केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टिल गोइंग अप, आपका वारे देख लीजिए स्टिल गोइंग अप, आपका आइनॉक्स विंड इज स्टिल गोइंग अप, आपका आइनॉक्स इंडिया है जो थोड़ा आपका एलएनजी एंड ऑल अगेन पावर से रिलेटेड आ गया आपका थोड़ा, इट इज स्टिल गोइंग अप। एंड जो आपके फार्मा के पॉकेट्स हैं, जो आपके फार्मा स्टॉक्स है कई सारे काफ़ी अच्छे हैं, जैसे जीएलएस देख रहे थे हम। सो अगेन जीएलएस का भी ठीक ठाक सेटअप बना हुआ है अभी, स्टिल गोइंग अप। ग्लिस जीवीएस करके एक फार्मा नेम ही है, अगेन यहाँ पे भी ब्रेकआउट के आसार है। सो लाइक इट्स लाइक कि आपका जो फार्मा हो गया, आपका थोड़ा पावर है, इसमें भी अभी स्ट्रेंथ बरकरार है। एंड आपके जो फ्यू मेटल स्टॉक्स है लाइक जीपीआईएल जैसा हो गया आपका स्टॉक, या फिर जिंदल स्टेनलेस स्टील जेएसएल, इन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी पावर मेंटेन है अभी। एंड आपका जो थोड़ा गोल्ड सेक्टर है जिसमें सेंको गोल्ड या फिर आपका कल्याण ज्वेलर्स, ये सब है, इनमें भी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं बट हल्की सी इसमें स्टिल स्ट्रेंथ मेंटेन है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। तो ये कुछ सेक्टर्स है जिसमें आई विल बी फोकसिंग।
Thanks. Now, my another question is that life is such a busy, and being a professional, Right, is it not possible to manually right, identify all these stocks? right, Do you definitely. suggest any options which is available to find out which of the stocks is going to be the relative strength and going to break out in coming few days or in the consolidation? Because we find that most of the stock which we have find, either they have already break out and we Right, come through this information through the only source is Twitter. right, 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 So the breakout come out, then we come to know. Is right, there any possible options that being a beginner, we can identify the stocks which is about to right. give the breakout? सो अबाउट टू गिव द ब्रेकआउट में इट्स लाइक उसको ऑटोमेट करना इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको Yeah. आप उसको स्कैनर की लैंग्वेज में कैसे लाइक डिफाइन करोगे दैट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट कि आपको बाय बिफोर ब्रेकआउट मिल सके दैट्स वाई लाइक आप एक क्राइटेरिया रख सकते हो लाइक लुकिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ओनली लाइक जैसे बिगिनर है तो बिगिनर को लुकिंग फॉर लेट्स से 52 वीक हाई जो आपके जो भी स्टॉक 52 वीक हाई पे वहाँ पे इवन इफ यू आर बिजी आपको डेली टाइम निकाल के आपको थोड़ा सा वो टाइम देना पड़ेगा मैनुअली आपको चार्ट्स को गो थ्रू करना ही पड़ेगा अनलेस यू लाइक जब तक आपके माइंड में वो इम्प्रिंट नहीं हो जाता लाइक अनलेस इट इम्प्रिंट्स योर माइंड कि व्हाट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर तब तक you will have to wait, you will have to do the manual work even if you are let's say busy. Daily try to get half an hour is more than enough like आपका scanner है that already will give you like less number of stocks like I explained in the previous session ki like your 4% scan is giving 170 names here as you said ki problem is the stock has already moved a little bit right so there we face a little bit problem but uske liye if you want to identify such a setup where the stock is yet to break out वहाँ पे you'll have to do the manual work you'll have to give some time because उसको automate करने का there's actually no way the only thing you can identify is the strong sectors that too आपका थोड़ा अगर आपने indices के charts देख लिए let's say you look at the indices like आपने बैंक निफ्टी को देख लिया आपका बैंक निफ्टी कैसा चल रहा है या फिर आपने अपना आईटी को देख लिया आईटी इज लाइक आईटी का आपका चार्ट गुड है राइट या फिर आपने फार्मा को देख लिया but again index don't give you a proper kind of a picture as right but आपको अगर एक आपका इंडेक्स का चार्ट ऊपर जा रहा है दैट मीन्स द आपके पूरे सेक्टर में देयर स्टिल स्ट्रेंथ राइट सो वो एक मेथड है अदरवाइज आपको वो चीज मैनुअली ही करनी पड़ेगी दैट इज आई एम अफ्रेड कि जब आपको वो ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है विच इज येट टू ब्रेक आउट वो वहां पे No, आपका मैनुअल वर्क just लगे just need a clarity or bit assurance from your side. राइट Today morning I heard one of the social influencer. He was saying that now it is the stockage or market strength or something like that, at where you can take the paid version of that to find out the relative strength, stock strength. Do you advocate or not? It is not necessary for the beginners. Just take your opinion on this. ओके सो लाइक पेड में आपको लाइक देर आर 2 3 4 काइंड ऑफ पेड लाइक इसके ऑल्टरनेटिव्स आर देयर राइट कि जैसे आपका मार्केट स्मिथ हो गया सो Yes. मार्केट स्मिथ इज अनदर गुड सॉफ्टवेयर जिसमें आपको रेडीमेड स्क्रीन्स मिल जाती है जो आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा ईजी कर देता है एज कम्पेयर टू अ चार्टिंग और ट्रेडिंग व्यू जहाँ पे आपको एक प्रॉपर क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करके एक खुद अपने क्राइटेरिया के हिसाब से एक स्कैन बनाना पड़ेगा एंड Mhm. अनदर थिंग इज RRG चार्ट्स देर आर RRG चार्ट्स राइट जो आपको दिस रिलेटिव रोटेशनल गैप्स राइट जो आपको एक सेक्टर की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि विच ऑफ द सेक्टर इज कमिंग इन स्ट्रेंथ विच ऑफ द सेक्टर इज गोइंग आउट ऑफ द स्ट्रेंथ सो इसका अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं सो दिस आल्सो कम्स पेड राइट सो आपका ये पेड सॉफ्टवेयर होगा एक सो हियर जो आपका एक ग्रीन टेरिटरी द लीडिंग टेरिटरी में जो आपके जा रहा है राइट लेट्स से दिस लाइक कॉम्प क्यू लाइक यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल है सो दैट मीन्स यहाँ पे आप अपने सेक्टर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं कि विच सेक्टर इज शोइंग स्ट्रेंथ सो वो एक काफी यूजफुल टूल हो जाएगा इफ यू वांट टू गो फॉर समथिंग काइंड ऑफ अ पेड अदरवाइज फॉर अ बिगिनर I don't think there is a need for a beginner. There's need for you to spend some more time in the market. उसको manually देखना है. That is the Okay. best. That is the best kind of learning. That is the best way, in my opinion. Okay. Now, related to the one of your tweak,
Right. Today or yesterday you have mentioned something, the breakout is going to happen or very found very interesting in USA market. Right. 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 Can you please help your followers or the persons who are in the listening mode? What do you want to show in this tweet and how it find the strength in Okay, so this what I stock? wanted to show in the tweet, what I meant here was simply is that कि if I look at the overall trend of the stock, right, जो मैं इसका एक longer trend देखूंगा, if I wait a second, if I go on the, let me remove the short term moving averages, right? So like if I look at the overall trend, right, so weekly scale पे मैं जब पूरा trend देखूंगा, so there's one thing is clear that the stock is still above the 200 day moving average, एक proper uptrend दिख रहा है, that is even visible to the naked eye. What is happening interesting right now is that just like last time here 3-4 महीने का कंसोलिडेशन आया था स्टॉक में, बहुत अच्छा सा आपका एक ट्राइंगल टाइप का या वीसीपी टाइप का कंसोलिडेशन, एंड वहां से एक ब्रेकआउट आया था विद गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, उसके बाद एक बहुत अच्छा मूव आया था. Similar thing is happening right now as well कि the stock is taking support at the 200 moving average, एक well defined resistance है, एंड आपका एक पूरा ओवरऑल एक काफी अच्छी कंसोलिडेशन चल रही है, एंड यहाँ पे इसने क्या किया 200 डे से एक रिवर्सल मारा है विद गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एंड ऑल ऑफ दैट. सो दैट इज काइंड फॉर like जो people who are active, they can identify these areas early. Rest, it's simple for anybody to buy it, let's say above this 375 level, because आपका एक overall trend set हुआ हुआ है, and it's a big consolidation area as well, and something similar has happened earlier as well, right? And इसके आपको बहुत सारे examples मिल जाएंगे. So this is what I meant by that tweet. So you want to communicate that if this stock will move 370 and above, Yeah. then it will give us a good breakout. Na? Right. 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 Okay, Right. thanks. Okay. So someone else want to ask any question? If someone is not, I'm asking the last one question. I Okay. that I saw that some tweets are falling for the camps. Can you please help me to understand the camps is also interesting, very good, interesting in that case? Scams also, a simple thing here is that कि जो आपका एक पूरा एक let's say stage analysis देख लिया अगर इसमें हम, right, so like this was your typical stage 1 formation. So आपका जो डाउन ट्रेंड के बाद एक आपका कंसोलिडेशन आता है अच्छा सा, that is what your stage 1 formation is. So उसके बाद क्या हुआ, वहां से आपका एक पूरा रेंज इस्टेब्लिश हुआ, like as I said कि यूशा मार्टिन में above 370, right? So यहाँ पे the range was around this 2650 something. तो earlier few months earlier there was a breakout कि उसके बाद then what happened is that कि stock was taking support at the earlier resistance, जो आपका support resistance turned into support, that happened, right? And उसके बाद भी another base you know was formed there. So उसमें भी हम देखेंगे कि what was the area कि जहाँ से stock reverse कर रहा था was something around this area 2990 2980 somewhere like this. यहाँ से भी दोबारा इसने रिटर्न दिया. What's interesting now is that इसने इस एरिया से ब्रेकआउट दिया है with good amount of volume. That is what's happening here कि एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है आपका. Okay. Okay. So somebody else want to ask any question regarding the sell or anything? Good evening, Shubham bhai. Okay. So I just want to ask a specific question on Jaggle India. Can you open the chart for Jaggle India? What's the spelling? Jazzle. Okay, Z. Okay, okay. Yeah. Wait a second, my internet is a bit slow. Yeah, the first one is. Yeah, okay. So if you see the chart in the daily time frame, it was about to break. I mean, it broke on This the day, 20. Yes, yes. Okay. The previous one, This one? where the previous this area, yes. Okay. If you see the chart, it has a resistance over there, and it broke on 7th February. This Right. the area mentioned. Right, right. I'm taking that previous top, so it is yes this Yeah, top. this area, right? Yes. Okay, okay. So it is kind of consolidating in the entire time, and then Right. it gave a breakout with a good volume. Right. But for next few days, like market was down and it got Right. again the gap is filled. If you see the gap Right, is right. filled. Gap was filled entirely. Yes. So how do we trade this kind of setup? I mean,
should we wait for after the breakout? Should we wait for some more consolidation and then buy it, or what? Because in this time, I feel the the first on 7th February it broke out with good volume. Right, So I right, right. purchased it. Then the markets were down for 2 3 days. It was very volatile, and then again, if you see, it again shot up with a gap Right, opening, and now it's right. above this. So हम लोग इसको किस किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं? I mean, So my method is simple for the gap up sell. Ki I don't wait for the consolidation after the gap up. Gap up once I like you said कि इस दिन जिस दिन breakout हुआ with the gap with good amount of volume. So yes. my way is just if I could get it that day, that is my entry. And once the gap is like broken, जो आपका gap का boundary होता है upper boundary, right? Once that is broken, I just simply get out. That is my method because if a gap up is strong, most of the time it will not get filled. ये तो आपका जो market की वजह से एकदम से नीचे आ गया, right? That was one of the issue here that happened, Yes. right? Yes. So Yes. for Yes. gap ups, it's always for me कि I'll just if I'm able to buy it right after the gap up, that happens, right? So that is like my perfect entry. If I show you some gap ups here, like this KPIL was one of the really good trades that I had. So here also same thing happened. There was a gap up from the range, right? इधर आप देखोगे अगर आपका already there was a resistance area there, and there was a gap Yes. up with the range, and there was this huge volume as well on that day as well. So I bought on that day itself, although it consolidated after that and after that for quite some time, but never it showed the weakness after that. Never the gap was filled, and look how beautifully it moved after that. वैसे ही अगर हम Hello, another sir. example, yeah. Yes. Sir, one another example, we you caught RVNL at near about 145 gap up day. Right, After that, stock rally to about 200. right. Somewhere around here I think so, right. Yes, यहाँ sir. पे Yes, भी sir. यहाँ पे भी सेम चीज हुई. सो व्हाट आई ट्राई टू से इज कि जब आपका गैप अप यू व्हेन यू आइडेंटिफाई द गैप अप, दैट इज द बेस्ट टाइम टू एंटर द स्टॉक in case of a gap up. Even though if it fills the gap after next few days, that's simple, take the SL, get out of the stock. If it comes back, you can always enter again. Similar thing in happened in like this example as well, as you seen Zaggle. There was another gap up after that, right? So again, Huh. still it's still maintaining very well. EIH also recently gave a gap up. The gap up was also filled, but stock came back within the range, and now it's consolidating beautifully, right? This was a Yes. like somewhere like somebody dumped the shares here, I think so. That was why it moved up like this. But again, if you see earnings ke baad, there was a gap up, and gap up was filled again on 13th Feb because of the market, right? But recovered as Yes. well and still within the range. So setup is still very very good. Like plus if it crosses 426 like that. So gap up mein your simple rule is कि you as soon as you identify the gap up, if you have a good आपका एसएल के लिए स्टॉप लॉस के लिए, इफ यू हैड अ गुड अमाउंट देयर कि यू कैन टेक अ 5% काइंड ऑफ अ stop loss or 6% kind of a stop loss you are getting there. So it's better to get in there, and if the gap up is filled, better to exit and just wait for the stock to set up again. ओके ओके. एक्चुअली जिस दिन मैंने बाय किया था ना, Right. वो उस दिन अर्निंग की वजह से गैप अप आया था, बट इफ यू सी, मतलब उसका रेजिस्टेंस उसने ब्यूटीफुली ब्रेक किया था. एक कप Right. जैसा फॉर्मेशन हो रहा था, Right. लाइक ब्रेकआउट के पहले जस्ट एक कप का Right. फॉर्मेशन हुआ Definitely. था. हाँ, Definitely. तो मैंने उस कप का फॉर्मेशन के बेस पे मैंने मैक्स रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके एंड आई बॉट इट एट द, Right. मतलब उस दिन गैप अप क्रिएट हो गया, बट मार्केट कंडीशन की वजह से गैप अप फील्ड हो गया. एंड देन There was अगेन nothing wrong with your buy. There was nothing हाँ wrong with your buy. Your हाँ. buy was perfect. वो तो मार्केट ने धोखा दे दिया. That is a separate thing. यस. Right. ओके. ठीक ठीक है. Sure. थैंक यू रजत. थैंक यू. Welcome. So anybody else have any question? Yeah, Ajay. Ajay, can you open Inox India in lower time frame, maybe 1 hour or something? Nobody is asking the question regarding the sell. Yeah. No, it is regarding sale only. Okay. Yeah. 1 hour time frame. Yeah, there was one gap up actually. Okay. I think so. We'll be able to identify. There this was candle, the breakout candle. Yeah, no, here, more. this one. No.
Actually, I'm on mobile. Maybe in Okay. more left side. The आइनॉक्स direct. इंडिया में गैप नहीं हुआ है. नहीं, Yeah, gap this up, one. there is no gap up in Inox India. No, actually, when it opened, right, it gap up. Then सी it गैप अप went आपका ना down. दो टाइप का होता है. गैप अप आपका क्या होता है, लेट्स से आपका एक डे का रेंज इतना है कैंडल का, लेट्स से जो आपका एक हाँ, डे का correct, रेंज correct. कैंडल का इतना है, एंड कैंडल लेट्स से क्लोज्ड समवेयर हियर, बट नेक्स्ट No, डे इट ओपनड actually, हियर, बट वो correct, correct. आपके जो पिछली कैंडल के रेंज के विद इन ही था. जो दूसरा गैप अप होता है दैट इज लाइक पूरा आपका जो पिछली कैंडल है उसकी रेंज के आउटसाइड होता है. सो आई गेस यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, जो आपके कैंडल के रेंज के विद इन में जो आपका गैप बना था. सर आपका आइनॉक्स इंडिया पे क्या व्यू है? सर आइनॉक्स तो इट इज रैन अप बिट फ्रॉम लाइक जहाँ पे गुड एंट्री पॉइंट मिल सकता था समवेयर अराउंड हियर 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास, राइट. सो मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था आई थिंक सो अराउंड समवेयर कि जब आपका ये थोड़ा यहाँ पे आया था अराउंड समवेयर अराउंड 1100, सो वहाँ से ऑलरेडी इसमें काफ़ी अच्छा मूव आ गया, लाइक 15 काइंड ऑफ परसेंट मूव वहाँ से आ गया. तो अभी एंट्री पे तो इट्स लाइक कि आपको स्टॉप लॉस तो बहुत डीप मिलेगा, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा फोकस में है लाइक स्टॉक. सो बट स्टिल आपको क्या चीज़ देखनी है कि आपका एंट्री पॉइंट कहाँ पे सबसे बेस्ट है, कि आपका रिस्क सबसे कम हो वहाँ पे, राइट. सो उसके लिए तो इट्स लाइक अभी तो इट्स लाइक मूव्ड अप लिटिल बिट, बट आपको ऐसा काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन मिलता है एंड उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा मूव आता है, दैट वुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग. Uh, can you go to 7th Feb in 15 minutes time, please? ओके 7th February, ओके दिस डे, No, no, next before. वेट 7th Feb. This is Feb 24. 7th. This I'm getting only this on 15-minute time frame pe. This is the only gap up that I'm getting. Correct, correct. So Okay. that time it opened, okay? Right. It will gap up. Right. But then suddenly it came down and then it went up. Right. Right. You see, right? Right. So how do you tackle such situation? Like maybe I would have entered early, Right. you can say, or what was the mistake basically? I want to know. I mean, See. how do you handle such a gap up? Okay, got it. So इसको आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, राइट, यू वर लुकिंग एट द स्मॉलर टाइम फ्रेम आपका. No, yeah, I was looking actually on daytime only. So at that Okay. time it opened gap up, but it Right. came down Right. same time. Right. But I exited actually. Same day I exited. ओके मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम कि इट ओपन समवेयर अराउंड 9:30 एंड उसके बाद ये डिप हुआ इसमें अराउंड 900 समथिंग, हाँ, आई गेस दैट इज correct. व्हाट यू आर सेइंग, राइट. और उसके बाद वो उसी दिन मूव आ गया बिकॉज दिस इज उसके आपका ऊपर चला गया वो। राइट, दिस इज आपका 6 फैब का कैंडल है जो. हाँ, सो correct. आई गेस आपने स्टॉप लॉस आई गेस बहुत ज़्यादा टाइट रख लिया वहाँ पे, आई थिंक सो. बिकॉज लेट्स से आपने ओपनिंग के बाद किस टाइम पे एंट्री ली, लाइक गिव मी अ प्राइस. Around I think I took around 920 I believe. So 920 पे तो you kept a stop loss very close I think so because नहीं, और ऊपर होगा 980 होगा I think 980 होगा. 980. हाँ. Okay, so 980 पे तो I don't get it कि how you उसके बाद ये नीचे तो नहीं आया बिकॉज वो ओपनिंग के टाइम नीचे आया था. बिकॉज अगर आप 15 मिनट्स पे भी जाके देखोगे उसको, बिकॉज आप 15 मिनट्स पे भी जाके देखोगे व्हाट हैपेंड हियर कि जो आपका ओपन हुआ था, ओपन के बाद वो हाई उसने बनाया था अराउंड समवेयर 958 959 आपका, उसके बाद वो नीचे आया था 900 तक एंड वहां से वो रिवर्स Then में I think 950 होगा. मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं बट ऐसा हुआ था कि लाइक यू बॉट राइट एट द ओपन. ऐसा हुआ कि आपने बिल्कुल ओपनिंग पे बाय कर दिया. नहीं एकदम ओपनिंग पे नहीं, मे बी आई थिंक 5 मिनट हुआ होगा. हाँ मतलब उसमें थोड़ा सा जंप आया होगा, उसके बाद आई गेस आपका ट्रिगर हुआ होगा समवेयर अराउंड 950 960 समवेयर, हाँ करेक्ट. आई गेस राइट. सो अगेन वहां से भी आपका अगर आप प्रीवियस डे लो और उसके पास भी आप थोड़ा अगर वो देखोगे तो आपको स्टॉप लॉस का एरिया वैसे था समवेयर अराउंड 6% का. आई गेस आपने वो मैनुअली सेल कर दिया जब वो नीचे आया, राइट. सो वहां पे आप थोड़ा
आपने वो मिस्टेक किया जो वहाँ पे आपने मैनुअली इंटरफेयर किया, हम्म राइट? सो बिकॉज जब भी आप एंट्री लोगे, सो वन थिंग शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि आपको अपना एक स्टॉप लॉस, मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना रखना है, कि हम्म आपको कितना रिस्क लेना है, आपको 5% का रिस्क लेना है, आपको 6% का रिस्क लेना है, आपको 7%, जो भी आपके कंफर्टेबल हो। एंड उसके बाद जस्ट पुट इट इन द सिस्टम, जो भी आप ब्रोकर यूज कर रहे हो उसमें सब में ऑप्शन होता है, आपका जीटीटी का ऑप्शन होता है, आपका स्टॉप लॉस का हम्म ऑप्शन होता है, राइट? एंड उसमें बस वो लेवल पुट कर दो एंड डोंट लुक एट द चार्ट। दैट इज जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, बिकॉज वो जब हम पैनिक में एक्टिविटी कर देते हैं उसकी वजह से बहुत बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके साथ हुआ, आई गेस। maybe I don't know. Maybe I used trigger basis. ओके, Maybe I would have used closing basis. That would have helped me here. क्लोजिंग बेसिस में भी थोड़ा रिस्क रहता ही है, बिकॉज समझे कि हाँ, अगर आपका वो closing स्टॉक, cost होगा, correct. तो अगर वो क्लोज ही बहुत नीचे हो जाता तो वो भी रिस्की होता, बट आई गेस कि आपको एक ब्रीदिंग स्पेस बोलते हैं, थोड़ा आपको सा एक वो स्टॉक को देना पड़ता है वो, जब भी उसमें ब्रेकआउट हो रहा है, रेंज से बाहर आ रहा है, तो आपको थोड़ा एक वहां पे कई बार स्क्वाट कर जाता है सेम डे में, जैसा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि जो हुआ कि ओपनिंग के बाद सडनली 950 से 900 पे आए, 900 से जंप मार के 1000 क्रॉस किया। correct, correct. सो वहां पे आपको एक ब्रीदिंग स्पेस देना पड़ेगा उस स्टॉक को, Exactly. Our second question is like during bear market, right? Like, राइट? how do you do swing trading? Is it like you trade less, keep stop loss very tight, or आई ट्रेड वेरी लेस, लाइक बहुत ही कम, लाइक अगर मेरा लास्ट ईयर अगर मेरा 200 प्लस ट्रेड्स थे, तो 2020 में मेरे ट्रेड्स वुड हैव बीन हाफ, okay, okay, राइट? सो वो वहां पे आपका जब एनवायरनमेंट ही आपका साथ नहीं देगा, तो नो मैटर आप टाइट स्टॉप लॉस रखो, आप वाइडर स्टॉप लॉस रखो, देर आर हायर चांसेस कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। बेयर मार्केट में द ओनली ग्रीन शूट्स इज कि आपको वहां पे भी कोई ना कोई सेक्टर चल रहा होगा, दैट इज द थिंग, correct. बिकॉज दे ऑलवेज से कि देयर इज ऑलवेज बुल मार्केट समवेयर, कि कहीं में वो कोई ना एक सेक्टर चल रहा होगा, तो इफ यू गेट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इन दैट, दैट इज गुड। अदरवाइज जो बेस्ट चीज रहेगी दैट इज टू स्टे इन द कैश, थोड़ा साइड में बैठ के ऑब्जर्विंग, और मे बी समटाइम्स अगर ट्रेड भी लेने हैं तो विद अ स्मॉलर स्टॉप लॉस। एंड अगर ट्रेड्स में आपके कंटिन्यूस स्टॉप लॉस हिट हो गए, लेट्स से कि आपने थोड़ा बीच में मार्केट में, जैसे आपका काउंटर ट्रेंड रैली आता है बियर मार्केट में भी, राइट? सो आपने उस टाइम ट्रेड्स लिए विद अ टाइटर स्टॉप, राइट? बट अगर आपके सडनली स्टॉप लॉसेस जल्दी हिट हो रहे हैं, दैट मीन्स मार्केट आपको बोल रहा है कि अभी ट्रेडिंग का एनवायरनमेंट इज नॉट गुड, सो उसके बाद Correct. सिंपली बेटर टू सेट आउट Mm. कंप्लीटली, And one problem which I am facing currently is like if you see the market currently, it is राइट? not something like a proper bull market. It राइट? is like maybe some stocks are moving correctly, but राइट? it is not proper bull market. But so recently, I almost 80% I came into cash. Okay, राइट? but राइट? then suddenly it jumped, right? राइट? So how do you control that like how to control that emotion? Like problem is once you see the cash, राइट? you will look like and you see the Twitter and all here. राइट? राइट? Oh, राइट? market is correct, राइट? everything, this setup, that setup. So राइट? that time what happens is like uh, you are forced to like take some trade, राइट? 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 and that does actually mistake. I राइट? know. So how do you control that? So it's like Either avoiding Twitter. लाइक दैट इज वन थिंग कि दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन एक्चुअली, कि अगर आप वो अवॉइड कर सको दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन, बट अदर देन दैट इट्स लाइक कि आई टू गेट द सेम लाइक काइंड ऑफ प्रेशर कि जब आपका कैश में आ जाता है एंड उसके बाद सडनली और मार्केट रिवर्सेस, आपको 2-3%, 2-3-4% का घस्सा लग गया है, राइट? आपका प्रॉफिट जो टॉप में था वहां से 4-5% डाउन आ चुका है एंड यू आर आउट इन द विद द कैश, राइट? सो ये दैट इज द प्रॉब्लम विद द स्विंग ट्रेडर्स, राइट? सो उसके बाद मार्केट सडनली रिकवर करता है एंड यू गेट द अर्ज कि मेरे को दोबारा से इन्वेस्ट होना है इसमें, एंड समटाइम्स यू गेट द सेटअप्स एज वेल, सो Correct. Because I have seen on Twitter also the I won't name, but I have seen he was saying like market is not good and all. I am into cash. Suddenly next day too many setup and all, and so that actually deviates right, the right, mind. right.
So again, this is happening because mainly because of the how the market is behaving from some time. कि आपका just last एक महीने में ही देख लो, look at the shakeouts that have happened, right? Correct. उसके बाद एकदम से रिकवरी आ जाती है like this, and ये हाँ, एक अच्छा सा फेज था बीच में if somebody captured it, right? जो correct. आपको पूरा जनवरी से फरवरी तक थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा अच्छा फेज था, बट देन सडनली पूरा ड्रॉप आ गया एंड जो इतना गेन्स हुआ इस पूरे फेज में वो पूरा वाइप आउट हो जाता है ऑलमोस्ट 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 वो पूरा वाइप आउट हो जाता है आपके उस फेज का, बिकॉज वी वर नॉट रेडी फॉर दिस. हम्म, सो वहां पे मेरा अभी तक का सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज करंटली आई एम डूइंग, कि बिकॉज यहाँ पे दोबारा सेम चीज हुई है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होके दोबारा वापस आ गया, देन दोबारा रिसेंटली परसों भी हुआ, थर्सडे को भी हुआ कि थोड़ा सा डाउन आया जिस दिन एकदम से सडनली आपके मैक्सिमम स्टॉक्स ड्रॉप एंड वहां से अगले अगले दिन थोड़ा आपका रिकवरी आ गया, राइट? सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि इफ आई एम गेटिंग अ गुड सेटअप, लाइक जैसे कि आपका वाबा आ गया, सो इफ यू फॉलो माई दैट व्हाट्सएप चैनल जहाँ पे मैं अपने वो सैम्पल जर्नल डालता हूँ जिसमें अपनी ट्रेडिंग बेस, सो इफ यू आर गेटिंग अ सेटअप लाइक दिस जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा मार्केट से, लाइक यू सी इवन द मार्केट ड्रॉप्ड, व्हेन द मार्केट ड्रॉप्ड ये इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था वहां से बाउंस बैक मार गया ये, राइट, वेरी क्विकली, देयर वाज नो डाउन मूव आफ्टर दैट, एंड अभी भी रिसेंटली जब तक स्टॉक को आपको फर्क नहीं पड़ा, किसी स्टॉक को फर्क नहीं पड़ रहा, तब तक यू कीप होल्डिंग दैट, या फिर उसमें दोबारा आपको बाइंग करनी है, देन यू कैन डू. और अदरवाइज मैक्सिमम आपका बेस्ट तो वही रहेगा इफ यू कैन अवॉइड द सोशल मीडिया नॉइस, राइट, बिकॉज correct. आइनॉक्स भी आप देखोगे तो जल्दी इसने भी बहुत जल्दी रिकवर करके बाउंस बैक मार दिया, Correct. राइट? And this was one of my bad trade. I took entry very early. If राइट I would have put my stop loss better way, then राइट I would have. राइट, वो आपका ट्रेड मिसमैनेजमेंट हो गया, Correct. राइट? सो इट्स बेटर कि आपको अगर इस टाइप के सेटअप मिल रहे, सो आइड से कि आपको उसमें घुसना चाहिए, राइट? बिकॉज इफ यू आर गेटिंग सच अ गुड सेटअप, जैसे बाबा दिखाया कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यू सी दिस वन, लाइक आपका सुप्रिया भी, लाइक इट्स काइंड ऑफ डूइंग डूइंग गुड आफ्टर आप गैप अप आया था, अर्निंग्स गैप अप, उसके बाद उसको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा मार्केट से. सो इफ यू गेट दोज काइंड ऑफ सेटअप साइड से कि आप उसमें स्टे इन्वेस्टेड, स्टे विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस, अदरवाइज if you're getting too many setups, it's not like कि हमारे को जंप इन करना ही पड़ेगा, that is kind of a mental barrier जो आपको वो खुद सॉल्व करना पड़ेगा, उसको अपने मेंटल बैरियर को खुद सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं ट्विटर पे बोलने दो लोगों को, इट्स ओके, हमारा काम है बोलना ट्विटर पे, हम मार्केटिंग कर रहे हैं बेसिकली ट्विटर पे, नथिंग एल्स. सो वहाँ पे वी हैव टू मैनुअली अवॉइड दैट नॉइस. Yeah, I'm feeling so. I need to remove या some of the account I am following. लाइक जो आपका जो ट्रेडिंग आवर्स है उसमें आप ट्विटर डिलीट कर दो, like install it after 4 p.m. That is what I do sometimes. Oh, thank you. Okay, sure. So anybody else have any question regarding when to sell, how to sell, and all of that? हेलो सर. Hello. हेलो. Ask your question. सर आपके फेवरेट तीन ट्रेडर कौन से हैं? Favorite 3 traders? फेवरेट आपके फेवरेट. Okay, like अभी मतलब अपने वो ट्विटर पे इंडियन जस्ट लाइक मार्केट, मार्क मिनर भी नहीं जस्ट. अच्छा वैसे वैसे टाइप नो के, नो वो ऑल ओवर. all over, Yes, all sir. over. So my favorite are like first पे my favorite is Nicholas Darvas. Second is Mark Minervini, definitely Mark Minervini. And third number पे है Dan Zanger. Dan Ginger. Okay. Yes sir. Sir, thank you. Okay, okay, sure. So Dan Jenger is the same person, right? He says like he buy only such stock which does not pull back, right? Right. He says like winning horses does not come back to. Right. So he buys stocks like this, कि जहाँ पे आपका एक this like प्योर, जहाँ पे आपका एक ब्रेकआउट आया एंड लाइक दीज आर हिज फेवरेट काइंड ऑफ सेटअप्स कि जिसमें जरा सा भी पुल बैक नहीं आता एंड द स्टॉक कीप्स गोइंग अप. These are they, like And it is actually if he gets a pullback, he will exit. he will exit. Yeah. Right, so that is his method of trading. But what makes him exceptional is like unka position size and sticking to the rules. So if you
win you win very very big, if you lose very very small. तो वो एडवांटेज है उनके तरीके सर सेम सर सर सेम लाइक कुला मैगी का। सेम लाइक, हाँ, यस 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 यस, कॉल मैगी, कुला मैगी या कुला मैगी या बट उनका क्या है, हिज पोजीशन साइज इज लाइक एक्सेप्शनल, लाइक उतना ड्रॉ डाउन हैंडल करना इज लाइक very difficult for people like us. He is like 80% he is in drawdown. वो 80% ऑफ द टाइम वो ड्रॉ डाउन में होता है, उनका अकाउंट नेगेटिव में चल रहा होता है, बट जब उनका विनिंग ट्रेड आता है सो इट्स लाइक मच मच लार्जर, सो वो बहुत ज़्यादा सर खतरनाक। ह्यूज रिटर्न या एग्जैक्टली, ह्यूज रिटर्न्स, लाइक उनका मेंटल, लाइक जो उनका साइकोलॉजी है दैट इज लाइक ब्रिलियंट इस चीज़ में। बाकी एक्चुअली आई ट्राई टू स्टडी, बट मैं उनके सिस्टम को बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर पाया, बिकॉज आई कांट टेक लाइक 30 40 50% काइंड ऑफ पोजीशन साइज, दैट इज माई लाइक मेरा तरीका, लाइक आई कांट गो विद दैट मच काइंड ऑफ पोजीशन साइज। सर व्हाट इज योर मैक्सिमम लॉस स्विंग रेट लाइक मिनिमम स्टॉप लॉस इज लाइक मेरा 5 6% की रेंज में, लाइक नॉट मिनिमम, मैक्सिमम लाइक 5 6% की रेंज में, इफ आई एम गेटिंग अ स्टॉप लॉस दैट इज अ गुड थिंग। I don't trade with a very tight stop loss of like 1.5%, 2%. Like वो that is not my method. My method is simply like 4 5 6% के आसपास if I'm getting a stop. And sometimes if the setup is too attractive कि जहाँ पे मेरे को 2 3% kind of stop भी मिल रहा है, that is even better. But usually 4 5% kind of stop मेरे लिए ठीक रहता है. यस सर एक्चुअली महेश जी, आपकी आवाज़ ना बहुत कट हो रही है बीच बीच में, आप मे बी टाइप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. यस सर एक्चुअली ये लास्ट 2 3 मंथ्स पे क्या हो रहा है सर राइट. कि अच्छा सेटअप इमर्ज हो रहा है और हम अपन समझो भी बाय भी करते हैं, लेकिन वो उसमें प्रॉफिट क्वेश्चन आने के बाद एक ऐसा शेकआउट आ जाता है, प्रॉफिट पूरा वाइप आउट हो जाता है। ट्रू. तो वो बस बहुत जैसे हड़को एक्सपीरियंस लिया, हड़को आई बॉट 15 20 प्रॉफिट था, लेकिन एक दिन शेकआउट आना तो पूरा प्रॉफिट चला गया। राइट. ऐसा हो रहा है। राइट. राइट. हाँ, ये तो सबके साथ ही हो रहा है आजकल, हम सबको भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, मार्केट में एकदम से शेक आउट आता है. सो यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा एक एनवायरनमेंट के साथ आपको थोड़ा अपने रूल्स में शिफ्टिंग करनी पड़ेगी कि ओके अभी एनवायरनमेंट टफ हो रहा है कि इफ़ आई एम होल्डिंग फॉर स्लाइटली लॉन्गर तो वहाँ पे शेक आउट आ रहा है, मेरा पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो रहा है. सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी में कि 15% 20% काइंड ऑफ प्रॉफिट आया मुझे, आई जस्ट लाइक अपना मेजोरिटी पोजीशन निकाल दिया, थोड़ा सा रखा, उसमें स्टॉप लॉस वेट होगा, दैट इज नॉट अ बिग डील कि वहाँ पे अपना मेजोरिटी पोजीशन निकाल दिया. बिकॉज अगेन दैट इज आई एम सेइंग कि आपके मार्केट के एनवायरनमेंट के हिसाब से, बिकॉज अभी आपका बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है, बिकॉज जो आपका शेकआउट्स आ रहे हैं बार बार, सो उसके हिसाब से थोड़ा सा शिफ्ट इन स्ट्रेटेजी कि 15% 20% पे आपने निकाल दिया. So I guess if nobody else has any questions, so I guess we should finish the session today, right? थैंक यू सर, थैंक यू सर। Welcome, welcome. So I guess all of you guys enjoyed the session and do focus on this selling part कि आपको एक अपना selling का एक system बनाना पड़ेगा कि if you are selling into strength, you are selling into weakness, you are manually selling on the basis of your risk reward, या फिर आपका उससे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है जो चीज़ कि what is the reason for buying the stock. So I guess all of you learned something new and enjoyed the session, right? That is really helpful, Ajay ji. Thank you. I quite enjoyed and very informative session. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you. So I also upload the video on the YouTube as well, एक दो दिन में, maybe tomorrow I'll upload the video on YouTube as well. तो जिसको दोबारा से देखना होगा, and do share it with your friends as well. Okay guys, good night, and I really hope you enjoyed the session. Okay, bye bye.